Assalamualaikum. Today we are going to start our third lecture, which is regarding genetic variation. Genetic variation is a difference in DNA among individuals or the differences between the populations. Genetic variation क्या होती है? वेरिएशन होती है चेंज DNA के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर या फिर पॉपुलेशन के अंदर, जीन्स के अंदर जो चेंज होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन. देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन इंक्लूडिंग म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन. म्यूटेशन हो सकती है जो कि चेंज आ जाता है या चेंज हो जाता है जीन, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन, कम्बिनेशन के दौरान जो चेंज आ जाता है उसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं. Mutation is the ultimate source of the genetic variation, but mechanisms such as sexual reproduction and genetic drift contribute to it as well. जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एक प्रोसेस है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर जेनेटिक चेंज भी आ जाता है, जिसकी वजह से जीन्स वेरिएट कर जाते हैं और न्यू रिकम्बिनेट विद द म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन के साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं. मेजरमेंट ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक वेरिएशंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? वेराइटी ऑफ जीन्स जो है जो चेंज होते हैं, लेवल उसका कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं? जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉमनली मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ द पॉलीमॉर्फिक जीन लोसाई और द परसेंटेज ऑफ द जीन लोसाई इन द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. हम परसेंटेज के ऊपर, लोकस के ऊपर परसेंटेज देखते हैं और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर हम परसेंटेज ऑफ जीन ट्रांसफ़र या जीन वेरिएशन हम देखते हैं. जेनेटिक वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन. अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें पॉपुलेशन के अंदर, तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन किस तरीके से होती है? जेनेटिक वेरिएशन कैन बी आइडेंटिफाइड एट मैनी लेवल्स के ऊपर. जैसे कि हम पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे. ये हमारा साइंटिफिक रूल है. उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जेनेटिक वेरिएशन कैन बी आइडेंटिफाइड एट मैनी लेवल्स. इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाइड जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम और बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएशन इन द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स. यानी जो ट्रेट्स क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास हेयर कलर, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हेयर कलर, आई कलर are two different traits, and two is the quantity. The traits that are vary continuously and are coded by the many genes. traits या फिर characters जो हैं continuously change and change according to species or according to individual. Observation of the phenotypic variation in the quantitative traits are discrete trait. They are discrete in trait. Okay, traits that fall into discrete categories and are coded for one or few genes. जो discrete genes होते हैं वो एक trait of the gene के लिए लिए जाते हैं. जैसे कि हम अगर बात करें कलर की, तो कलर में पिंक कलर भी आ सकता है, रेड पेटल्स का कलर भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, etc. एग्जामिनेशन वेरिएशन ऑफ द एट द लेवल ऑफ एंजाइम्स. हम एंजाइम के लेवल पे हम कैसे वेरिएशन को एग्जामिन कर सकते हैं? पहले हमने देखा फिनोटाइपिक, देखने के लिहाज से अगर हम देखें तो लेंथ में हम लोगों ने देखा डॉग्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमने ली, और उसके अलावा फिनोटाइपिक वेरिएशन अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें, कितने कलर्स की क्वांटिटी, कितने वेरिएशन, कितने उसके वाइब्रेंट्स बने हैं. इसके अलावा हम अब एग्जामिन करेंगे एंजाइम लेवल पे यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द फिनोटाइपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज़ करते हुए हम एंजाइम के बेस पे इसके वेरिएशन को जांच सकते हैं, देख सकते हैं. पॉलीमॉर्फिक जीन्स जो हैं हैव मोर देन वन एलील एट ईच लोकस पे, एक लोकस पे जीन के ऊपर एलील के ऊपर एक से ज़्यादा लोसाई मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर हम जीन्स की वेरिएशन को देखते हैं. हाफ ऑफ द जेनेटिक जीन्स दैट कोड फॉर एंजाइम्स इन इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स में भी पॉलीमॉर्फिक. अच्छा, हाफ जो होते हैं वो क्या किसके लिए कोड कर रहे होते हैं? इंसेक्ट्स के लिए. लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं. वेयर एज पॉलीमॉर्फिज्म आर लेस कॉमन अमंग वर्टिब्रेट्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो लेस कॉमन है. पॉलीमॉर्फिक जीन्स कौन से होते हैं? हैव मोर देन वन एलील एट ईच लोकस. एक लोकस के ऊपर ज़्यादा अगर मौजूद होंगी एलील्स तो हैव polymorphic genes have more than one allele. एक से ज़्यादा
एलील मौजूद होती हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही लोकस के ऊपर, उसको हम पॉलीमॉर्फिक जीन कहते हैं, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होती हैं वो लेस कॉमन होती हैं। जेनेटिक वेरिएशन इन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट के अंदर अगर हम देखें तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जिसकी वजह से वीट जो है उसकी वेरिएशन मतलब अपीयरेंस फिनोटिपिकली भी डिफरेंट होता है और लोसाई के मुताबिक भी वो डिफरेंटली लाई कर रहे होते हैं, इंजाइमेटिक एक्शन भी उनका डिफरेंटली लाई कर रहा होता है। ओके, जेनेटिक वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स, अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि अल्टीमेटली जेनेटिक वेरिएशन इज कास्ड बाय वेरिएशन इन ऑर्डर ऑफ बेसिस इन द न्यूक्लियोटाइड्स इन द जीन। जीन वेरिएशन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन में अगर चेंजेस आ जाते हैं तब भी हो जाती है। डीएनए सीक्वेंसिंग की जिसके लिए हम करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी नाउ अलाउज साइंटिस्ट टू डायरेक्टली सीक्वेंस डीएनए विच हैज़ आइडेंटिफाइड इवन मोर जेनेटिक वेरिएशन दैन वेरी वॉज प्रीवियसली डिटेक्टेड बाय द प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम लोग डिटेक्शन करते थे, लेकिन जो है ना न्यू टेक्निक आई है डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसमें हम डीएनए को सीक्वेंस कर देते हैं और उसकी वेरिएशन को परखते हैं, जांचते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द डीएनए हैज़ शोन जेनेटिक वेरिएशन इन बोथ कोडिंग जीन रीजन्स एंड नॉन कोडिंग रीजन इन ट्रांस रीजन्स ऑफ द जीन्स। ओके, इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं डीएनए के ऊपर, और उसकी वेरिएशन जो होती है वो हम किससे देख सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग से सीक्वेंस करके डीएनए को। तो हम लोगों को डीएनए सीक्वेंसिंग इज़ द बेस्ट देन द इलेक्ट्रोफोरेसिस देन द अदर वन दैट वाज protein electrophoresis. Okay, next protein electrophoresis. Okay, phenotypic variation as a consequence underlying genetic variation. Okay, variety is good thing in the nature, variety is good thing. So the phenotypic variation is a consequence of the underlying genetic variation. Genetic variation will result in phenotypic variation, genetic variation will result in the phenotypic. So obviously when genes change, phenotypic also ratio change. In order to nucleotides in the DNA sequence results in the difference in the order of amino acids in the protein coded by the DNA sequence, and the resultant differences in the amino acid sequence influence the shape and the function, thus the function of the enzyme. So obviously when gene variate, then the phenotypic ratio also variate. As protein in protein there is amino acids. If amino acids change, the shape of the individual or species may also population level may also change. Genetic variation between populations. If we talk about genetic variation means genetic differences in the population from different locations. For example, the natural selection or genetic drift. There are two types, as we already studied about natural selection and genetic drift in the previous classes in the detail. Okay, genus Spiza Mangostorosis, genus Spiza fortis. These are the finches of the Galapagos archipelago. That's the Galapagos was the island at that finches was finches variation first time observed by the Darwin. Sources of the genetic variation: mutation, genetic recombination, random segmentation, and the random fertilization. There are various sources by which the genetic recombination happen. That are all. Mutation. Random mutations are the ultimate source of the genetic variation. Genetic variation are the ultimate source, and variation lead to the mutation leads to the variation, produce variety. Okay, mutations are likely to. Now, what are the mutations? Mutations are the likely to be rare, and most mutations are the neutral and deleterious. Sometimes Down, for example, we can take an example of the Down syndrome patient that may affected by the mutation and leads to the Down syndrome, or maybe sometime some other central nervous system disorders lead for now. But in some instances, the new alleles can be favored by natural selection.
Okay, but in some cases mutation leads in a positive way, in a consequence way, in a beneficial way. Polyploidy is an example of the chromosomal mutation. Polyploidy is the condition wherein the organism have three or more sets of genetic variation. If one or more variation in a gene, it may lead to the polyploidy. Genetic recombination, random segregation, and the random fertilization. Crossing over means genetic recombination, means genetic material changes in the chromosome and leads to the variation. And random segregation means assortment. During the meiosis, as we already studied about meiosis and mitosis in the previous all the classes, can result in the production of the new alleles or new recombinations of the allele. Means new recombination, new copies originate, and the variety of the individuals we will get. Furthermore, random fertilization also contributes to the variation. Random fertilization leads to the different variation, and the recombination can be facilitated by the possible genetic elements, indigenous retrovirus lines. Variation leads to the many different viruses and different medicines we can make, different vaccines we can prepare by this method. That's why this can be helpful for a genome. For a given genome, multicellular organism, genetic variation can be acquired in a somatic. In multicellular, there is a somatic change or inherited through the germline, and we can inherit these through the germline, and we can produce new variant of copies for the production of anything we want, for the sake of good production. Parents have, for example, we can take an example. Parents have similar genes coding in the specific situations where they reproduce, and variation in the offspring is seen. Offspring continuing the variation also reproduce and passes down traits to their offsprings. Okay, forms of the genetic variation. Genetic variation can be divided into different forms according to the size and type of genetic variation and underpinning genetic change. Okay, genetic variation may also lead to the change in the size and the type of genomic variation. Okay, by the underpinning we can detect the variation level. Small scale sequence variation, large scale or numerical variation. If we can take a small scale, it's 1 kilo base pair in insertion or deletion take place, so leads to the small cell sequence in variation. Large scale structural variation means less than 1 kilo base pair, more than 1 kilo base pair, leads to the translocation inversion or the segmental acquired uniparental disomy. Okay, numerical variation means in whole chromosome or genome can be either polyploidy, many in a many, or a single aneuploidy or opposite way. Okay, numerical variation leads. Okay, range of variation in the muscle donics. Look at here, these lines show variations. Okay, maintenance of the genetic variation in population of a variety of factors maintain genetic variation in population. If we expect, if we consider these factors, natural selection can lead heterozygoty. Heterozygoty means different zygotes, means not homo means similar, and hetero means different, which may be called as a recessive trait, you can say, but homozygous is the dominant trait. Heterozygosity means potentially harmful recessive alleles can be hidden from natural in heterozygous individuals in a population of the diploid. If we take a diploid, there is one dominant, another one is recessive, so it's a heteroploidy.
consider, and recessive alleles are expressed, and less common homozygous individuals are formed. Okay, in natural selection we consider about the variation is like that. Natural selection can also maintain variation in the balance polymorphism, and natural selection can be taken as a balanced polymorphism. Okay, now next is the balanced polymorphism is a situation. Balanced polymorphism, what is meant by the balanced polymorphism is a situation in which two different variations of the gene are maintained in a population of organisms, because the individual carrying both versions are better able to survive than the survivor who have two copies of the either version alone. Okay, two copies means poly, it means two different variations versions are of individual produced, and that's the better thing, and that's a variety of nature and variety of life, that is beauty of the nature, you can say. Balanced polymorphism may occur by heterozygotes are favored, or where when selection is frequency dependent. If selection is frequency dependent, then the heterozygotes are favored. That was all.